A very good morning to all of you dear students. As you know that now our math class is there, and in the last class we started chapter 8 and exercise 8.2. Some questions we completed. The exercise 8.2 depend on only one table. That if you learn that table, then the exercise 8.2 is too much easy. So I hope now today you learn almost learn the table. So if now also you didn't, then today you can. But if you learn, then it is good for you. So you have to learn the table, and this table, on the basis of this table, many questions will come on the exam, come in the exam. So you have to solve there easily. But if you learn the table, okay. So now we are going to start the remaining questions of the exercise 8.2. So as you know that exercise 8.2, one question we completed first one, and the second one till third of the second we completed. And the fourth one of the second is remaining. The fourth of the second is like this: 2 10 30 1 minus 10 square 30. और ऑप्शन आपको वही वापस नहीं करना है. So let's put the value of 10 30. So as you know that the value of 10 30 is sin 30 upon cos 30. So the value of 10 30 is आ जाएगा आपके पास क्या आएगा 1 by root 3, 1 by root 3, okay, and 1 minus 1 by root 3 whole square. तो ये आपका हो जाएगा 2 by root 3, यहाँ पे 1 minus 1 upon 3. So 2 by root 3 and LCM is 3, 3 minus 1, and 2 by root 3 LCM is 2 by 3. So make the ratio over 2 by root 3 into 3 by root 2 to cut. Okay, so answer is root 3 3 by 3. अब ये तो इसके अंदर किसी की वैल्यू होती नहीं है, बट एज यू नो दैट 3 को हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 दो बार लिख सकते तो एक कट जाएगा जब तक रूट. अब आपको ये दिख रहा है कि रूट 3 किसकी वैल्यू होगी, तो cos 60 की वैल्यू होगी 1 by 2, sin 60 then root 3 by 2, tan 30 is tan 60 root 3 and sin 30 is the answer is tan 60. ये आपको कई बार थोड़ा सा क्लियरली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, then you can get your answer. Okay, so I hope you understood. So let's take this screenshot and write in your notebook. Okay, students, so the next third question of the exercise 8.2. If the tan a plus b equals to root 3 and tan a minus b equals to 1 upon root 3, 0 is less than a plus b is less than 90 plus 90 degree, and a is greater than b, what is the value of a and b? तो आपको a और b फाइंड करना है, और ये दो कंडीशंस आपको दी हुई है. बहुत इजी होता है ये, आपको इसको फॉलो करना है कि tan a plus b is equals to already given root 3. So as you know that the value of tan, यहाँ पे क्या है tan और यहाँ पे क्या है root 3. Then the value of root 3 in the tan के टेबल में जो वैल्यू होती है वो होती है tan 60 की वैल्यू root 3 होती है, as you know that. So instead of root 3 just put tan 60. So tan a plus b equals to tan 60. Tan will be removed, equal to that ऐसे, and then final answer is a plus b is equal to 60. ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई. And like this also the second one, tan a minus b is equals to the result is 1 upon root 3. As you know that tan 30, value of tan 30 is 1 upon root 3. So instead of 1 upon root 3, you just put tan 30. ये आ गया आपका tan 30. Tan will be removed, then a minus b is equal to 30. Now two equations are there. So for this two equations, I taught you the chapter 3rd by the complete squaring, cross multiplication method, elimination method, and substitution method. You just apply any method and solve the equation. So I will solve a plus b is equal to 60 is given. Second one a minus b is equal to 30. Okay, so don't change this whole directly, but then a 2 and 60 and 30 90. So a equals to 90 upon the result is 45. Put the value of a any equation. This is equation के a की value equal to 45 plus b is equal to 60. So the b is equal to 60 minus 40. Then answer is 50. So you can get the answer of a and b. So I hope you understood this question. This question is too much important. Like this only example is there, that example you have to solve in homework. So if you are having any doubt, then of course you can ask. Okay, so let's take the screenshot.
So the next and last question of the exercise 8.2 is remaining. State whether the following true or false and justify your answer. आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है एंड जस्टिफाई करना. सो इसके लिए आपको एक बार टेबल ड्रॉ कर लेते हैं पूरी. सो एज यू नो दैट द टेबल इज लाइक दिस ओनली. द वैल्यू इज थीटा एंड फर्स्ट एंगल इज 30, 45, 60 and 90. After the first angle is sin theta, the second cos theta, and third tan theta, next cosec theta. Okay, then sec theta and cot theta. Okay, so as you know that the value of sin is 0 is 0 and then 1 by root 2, 1 by root 2, root 3 by 2 and then 1. After that 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, then 0. Okay, so after tan theta 0, then 1 by root 3, 1, root 3, infinite. Cot के लिए वापस यहाँ पर आएगा infinite, root 3, 1 by root 3, then आ जाएगा यहाँ पे infinite. Sorry, 0. Okay, अब उसके बाद आपके पास sin cot, then cosec के लिए जो है sin का ऑपोजिट नहीं infinite 2, 1 by root 2, then 2 by root 3, then 1. After that cosec sec के लिए cos का निकाल ऑपोजिट में 1, 2 by root 3, root 2, then 2 and infinite. This is your table. So the fourth question is depend on this table. That's why I draw the table. Okay. So now just see here the first one. First one of the question number 4 is given like this only. First one, sin A plus B is equals to sin A plus sin B. Sin A plus B is equals to sin A plus sin B. True है क्या? तो आप इससे कोई भी दो वैल्यू उठाइए, इसको पुट कीजिए, then you can get your answer or true or false. तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ओके, सो यहाँ कोई भी वैल्यू 30 और ले लिया हमने sin 30 plus 60 ले लिया हमने. यहाँ पे क्या करते हैं sin 30 and sin 60. तो sin 30 plus 60 means 90. sin 30 then 1 by 2. Okay, and sin 60 then root 3 by sin 30 then 1 LCM is 2 1 plus 2. सेम आया क्या? नहीं आया है. सो ये क्या है? फॉल्स. मतलब आपका ये स्टेटमेंट जो है पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. क्या आ गया आपका? फॉल्स. अगर सेम आया होता तो हम इसको क्या करते हैं? ट्रू करते. सेकंड वन, द वैल्यू ऑफ sin theta is increasing when theta is increasing. क्या है? sin की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है. यानी देखो थीटा 0 था, 30 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज. ओके, 30 तो sin क्या हो रहा है? 0 1 by 2, 1 by root 2, then root 3 by 2. तो ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. बिल्कुल यहाँ पे ये वाला भी क्या हो रहा है? इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू. जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन में क्या हो रहा है? इंक्रीज. सेकंड वन, सॉरी द थर्ड वन. ओके, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इंक्रीज व्हेन थीटा इज इंक्रीज. अब cos में चेक कर लो आप, तो cos में देख रहे हो जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज है 0 30 तो 1 फिर इससे कम हो गया, फिर और कम हो गया. अब ये cos तो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये क्या आएगा? फॉल्स. ओके, cos इंक्रीज नहीं हो रहा है. नेक्स्ट, sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज. sin थीटा और cos थीटा दोनों सेम है. क्या है? दोनों सेम. ऑल वैल्यूज तो भी सेम आ रहा है. कहां पे सेम है? केवल एक ही वैल्यू पे सेम है. इसमें 45 पे सेम है और इस सब पे अलग अलग है. इसमें क्या आएगा? फॉल्स. आई होप यू अंडरस्टूड. एक वैल्यू पे सेम है, इस पे 45 है. नेक्स्ट, cot A is not defined at 0. जब 0 है तो cot A not defined. बिल्कुल सही है. तो इसका भी क्या आएगा? ये आपका ट्रू है. जब ये 0 हो जाएगा तो cot की वैल्यू क्या आ रही है? नॉट डिफाइंड है. यहाँ पे अनडिफाइंड है, मतलब नॉट डिफाइंड है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू. सो दिस इज द वे टू सॉल्व द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.2. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सरसाइज 8.2 very well. Then now also if you are having any doubt, then you can ask on the Google Meet. But it depends on only that table. If you learn the table, then it is easy for you. As you know that so exercise 8.3 will be deleted from our syllabus. Exercise 8.3 जो है वो आपके syllabus से delete हो चुकी है. Exercise 8.3 is deleted from your syllabus. So only one exercise 8.4 is remaining, and the one more good news is there from the 1 September the school will be start. So during the that time we will solve the exercise 8.4. So now just write the 8.2 in your notebook. The exercise 8.3 is deleted from your syllabus because it depends on complementary angles. So that is the deleted. Okay. So 1.4 exercise 8.4 is remaining, that we will solve in the September. Okay. So just take the screenshot. If you are having doubts, then you can ask on the Google Meet. Thank you.
So exercise 8.3, just remember exercise 8.3 is reduced from your syllabus. Okay, only 8.3, 8.4 is there, that we will solve during the school hours when the school will start.